Hello everyone. So today you can find two kind of medical students around you. The first one who uses pen and paper for their conventional mode of academic teaching, whereas second one who uses iPad for maybe digital handmade notes creation as well as for certain other purposes. So today we'll talk about how you could utilize iPad as a medical student if you have it, and how I am utilizing what all the apps I have to fulfill the particular use. So now in this video, before we begin, I want to make it very clear that it is not at all necessary for any medical student at any stage to have an iPad. Okay, it's not like कि आपको चाहिए ही चाहिए. It's all up to you. I'll just let you know the uses, how I am using it, and how if you are planning you can use it in that manner. So for me personally, during the second third year of MBBS, I thought of taking a low budget tablet device because I'm not that good in digital notes making, as well as मुझे थोड़ा कागज़ पेन ही ठीक लगता था. बट इन द एंड ऑफ द फाइनल ईयर आई थॉट कि अब इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी, 2023 की नीट पीजी भी आ रही है, सो थोड़ा वर्कलोड विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, एंड सिंस आई एम ऑल्सो बीइंग अ यूट्यूब क्रिएटर, सो आई थॉट कि परफॉर्मेंस के लिए आई शुड गो टूवर्ड्स iPad. So that's the sole reason, although still right now I'm not preparing any notes on the iPad. I prefer pen and paper, but still I use it. So let's see how. Okay, so this is all features of my iPad are. So these are the particular apps that I have been using since time being, and today we'll discuss about them. So I have divided all the apps in the five major categories. Okay, so first thing is that you need to study. So first is your study apps, which are core related to medical purposes. Then second is productivity apps. Okay, so free time में थोड़ा productive होना है, मतलब time भी waste नहीं करना है पर थोड़ा chill भी करना है, तो productivity apps. Then there are apps which will help you in organizing things, because को बहुत सारी चीज़ हो जाती है, you need to organize them very well. And then there are apps which are related to your hobbies, as well as the apps which are related to your relaxation time. Okay, so first let's talk about educational apps. So educational apps, I have particularly 4 apps at present. So first is PrepLadder app, which is basically your one-stop solution for videos and all that. And then you have notes making के लिए, whatever notes I do make, I make it on GoodNotes 5 or Notability. So I prefer GoodNotes 5. So this is entirely a different thing. So GoodNotes 5 is better in certain manner, in sort of interface, and जैसे आपको organize का तरीका होता है, that is a bit better in GoodNotes 5. Although this is another debate. So ये दोनों चीज़ें पेड होती हैं, like 600-700 का एक यूजुअली ईयरली अमाउंट होता है जो आपको देना पड़ता है. देन फॉर अनदर ऐप विच आई यूज इज लिक्विड नोट्स, एंड दिस इज मेनली फॉर एनोटेटिंग योर PDFs while you are reading it. So now let's talk about PrepLadder app in detail regarding the videos and how I told you. So PrepLadder is a one-stop solution. इसमें आप जैसे कि आप यूज़र इंटरफेस भी देख सकते हैं. Initially there will be daily questions, there will be treasures and certain things. Then once you can start watching the videos. Okay, so suppose for whatever subject you need to watch, there are obviously top faculty in every subject available, right from Dr. Deepak Marwa sir, Dr. Zainab Bora ma'am, Dr. GRG sir. Okay, so suppose whenever you need to watch any particular video, so once you watch a video, there will be a section here in which there will be notes. Okay, so आप वीडियो के साथ साथ नोट्स भी पढ़ सकते हैं. सो इफ़ यू आर समवन जिसको प्रिंटेड नोट्स चाहिए और अभी बस उसको वीडियो सुनना है अलॉन्ग विद द नोट्स, सो यू कैन डू दैट थिंग. So once I particularly watch any kind of video, so I'll obviously go to the QBank of that particular unit and start solving it, so that I can know what I have studied, how I can apply it. Also there are previous year questions given in this. Videos are also of clinical case discussion, integrated videos and all that, which can be utilized. Then we will proceed to the test. So test में again you will get grand test, subject wise test, which you can give to improve your performance overall. So in this app you will get everything, right from watching the basic concepts to applying the knowledge there. So I'll give the link in the description, you can check that out from there, and if you download it from the link you will get 24 hours free access to the entire app, so you can yourself review it, and if you find it useful you can surely subscribe. So now let's proceed to the another. Although there are many apps, but currently I am using this much only, ताकि बहुत ज़्यादा burden भी ना हो जाए. Then I'll tell you some other apps related to productivity. So productivity दो टाइप की होती है. एक productivity होती है कि भैया आप काम कर रहे हो तो आप उसका काम वहाँ पे ख़त्म करो. दूसरा होता है कि आपको काम नहीं करना है बट आपका काम भी हो जाए, राइट. सो ऑन दैट सिमिलर नोट आई एम यूजिंग सर्टेन एप्स जो कि आपकी कोर मेडिकल नॉलेज को टेस्ट करती हैं, बट इन अ फन मैनर, राइट. सो नाउ दिस इज वन ऐप विच इज़ योर प्रोग्नोसिस, व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस. So this app could be very useful for initial year of MBBS as well.
सो जब आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं, आपको लगता है, तो आप इस ऐप को खोलें. इसमें देयर आर पिक्चर्स जिसमें पेशेंट के बारे में सर्टेन कंप्लेंट्स लिखी हुई होंगी and you need to diagnose. Okay, so whatever preliminary knowledge you have, if you have read that condition, you can also apply. And even if you are not going to hospital at present, so अगर आपको जब भी मौका मिले आप जाएं, and till then you can surely use this particular app. Then there's this app called Up to Date. So Up to Date में क्या होता है, basically you will get everything updated, right? So now if currently you are an intern basically, or you are someone who is a resident, so basically you can utilize it as a source of everything in a one particular place. कोई patient आया, उसका drug dosage मुझे नहीं पता है, तो I can simply go to Up to Date and I can take it. So इसके लिए you will require a subscription which you can get from your Amazonian friend or any friend who is having a subscription it from college. Okay, college library उनको देती है. Then there are other apps as well. So the other app is MD Calc. Okay, so MD Calc is an app जिसमें आप क्या होता है कि आपके बहुत सारे scores होते हैं राइट फ्रॉम योर सेकेंड ईयर टू फाइनल ईयर. ओके, सो अगर आपको मेल्ड स्कोर पेल्ड स्कोर याद नहीं आ रहा है, तो यू कैन सिंपली गो टू इट, चेक द स्कोर, यू कैन अप्लाई टू अ पेशेंट, यू कैन चेक कि जो भी स्कोर आया है उसका क्या इन्फ्रेंस है और उससे आप क्या बेटर कर सकते हैं पेशेंट के लिए. ओके, सो दिस इज अगेन समथिंग विच यू कैन यूटिलाइज श्योरली. देन देयर इज दिस ऐप कॉल्ड टच सर्जरी. तो टच सर्जरी इज एन ऐप जिसमें आप लाइक सपोज आप थर्ड ईयर स्टूडेंट है, आपने टॉन्सिलेक्टमी के बारे में OT में देखा या आपने प्रोसीजर पढ़ा. सो सर्जिकल प्रोसीजर्स ऐसा होता है कि इफ़ यू कांट वॉच इट देन यू कांट रिमेंबर इट, राइट. सो ऑन दैट पर्टिकुलर नोट, टच सर्जरी में आपको वो सारी सर्जिकल प्रोसीजर्स देखने को मिलेगी इन द 3D फॉर्म, जो कि ऑब्वियसली नॉट द बेस्ट, बट इट कैन ऑल्सो हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. Okay, then basically there are other section of apps like you have studied, now you need to apply the knowledge. You applied the knowledge in the Q banks, you did productivity, now you need to organize all these things. तो organizer apps जो है उसमें first I use is Todoist. तो Todoist is जैसे नाम समझ में आता है to do list बनाता है, बट सिंपल to do list नहीं बनाता है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग जोन, अलग अलग प्रायोरिटीज से आप एक to do list बना सकते हैं. Then there's this another app which is called as Pomo Focus, right? So if you are a student who is following Pomodoro technique, right? So उसमें क्या होगा, आप 25 मिनट्स पढ़ेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे. So Pomo Focus will help you do that particular thing, and this will mostly cover your things in a much elaborate way. आपको 45-15 करना है, आप उसको उस हिसाब से सेट कर सकते हैं. आपको वॉल्यूम बढ़ाना है, whatever you can do, you can surely do it. And then there's Alami app. जो लोग जिनको सुबह उठने में काफ़ी दिक्कत होती है मेरे जैसे, तो उन लोगों के लिए अलग अलग तरीके से हैं अलार्म ऑफ करने के. जैसे कि आप उठ के अपनी फ़ोटो खींचो, या तो आप कुछ स्टेप्स वॉक करो, कुछ कैलकुलेटर से प्रॉब्लम सॉल्व करो, एंड लाइक दैट. सो दिस इज अबाउट दैट. फॉरेस्ट ऐप इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन iPad. फॉरेस्ट काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं, but it is a paid app of I guess 350 rupees, so I am not using it currently. I have it on my Android device subscription, so I simply avoid it there. So now this is kind of productivity device. iPad is a productive device. आप अपने मोबाइल में जो करना है करिए, बट iPad को आप सिर्फ पढ़ाई के लिए रखिए, right? Now if you are someone who is very enthusiastic in making notes, so I'll make another video if you want regarding GoodNotes 5 and how to utilize it in various manners, right? Let me know in the comments. Then there are obviously certain apps which you all know very better, that अगर आपको relax करना है तो obviously it's all up to you. If you want to install your Netflix, Prime, Amazon, whatever you need, you can surely, but it will again depend on you कि आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं कि टाइम allocate करके उसको यूज़ करें. Then also in the case of relaxation techniques, I have Spotify and other such kind of apps. Then when we talk about hobbies, so if you are someone who is good in graphic designing or want to do something regarding that, maybe making YouTube thumbnails for your new YouTube channel, you can surely check out Canva. So Canva is a great app which is available across iOS, so you can surely make your thumbnails better by that. Also there are certain ways like Google Docs, Google Spreadsheets and Google Forms, via which you can organize all the data in one single place. There are also apps such as YouTube Creator Studio, which if you are a YouTuber you can surely utilize. Then once we are done with this, then I think there are certain games which you find कि हम खेल सकते हैं बट इतने एडिक्टिव नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल आई प्ले फ्रूट निंजा ऑफन, आई प्ले वर्डल. सो उसमें ज़्यादा भी टाइम वेस्ट नहीं होता है, बट थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी ज़रूरी होता है. सो गाइज एज सच देयर आर नॉट स्पेसिफिकेशन कि ये चीज़ होगी तो ही iPad मतलब यूज़फुल होगा, या iPad लेना है तो ही आप पढ़ पाएंगे. ऑब्वियसली नॉट. iPad इज़ अ ग्रेट सोर्स फॉर कंसोलिडेटिंग ऑल योर प्रोडक्टिविटी. आप वीडियोज़ देखने के साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, एंड मेनली यू कैन डू इज रीड PDFs ऑन द गो. इफ़ यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, काफ़ी सारी बुक्स हो जाती हैं, मल्टीपल बुक्स हो जाती हैं,
तो आप एक एक सब्जेक्ट की एक बुक ले लीजिए, लेकिन बाकी सारी आप PDF में पढ़ लीजिए. तो ऑब्वियसली टेलीग्राम इज द सोल क्रिएटर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, so you need to also have Telegram on your iPad. So if you need any other video on iPad as such or any other topic, please feel free to comment below. I'll mention the PrepLadder link again in the description, so kindly check that out and you'll obviously get 24 hours of free access. Thank you so much. Stay safe, stay healthy and keep learning, and do not forget to subscribe to the channel.